हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स चैनल। तो आज के वीडियो में आई एम गेटिंग टू यू द रिव्यू ऑफ द एयर इंडिया SBI सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड एक SBI एंड एयर इंडिया एयरलाइंस का कोलैबोरेशन है। इट्स अ वेरी सुपर प्रीमियम कार्ड विद अ हाई जॉइनिंग फी गाइज। एंड इस कार्ड में जितने रिवॉर्ड्स है और जितना इसमें ऑफर्स देते हैं SBI वाले, दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्ट 5 to 6 minutes in this video. Don't skip any of this and you are going to get rewarded with an eye-opening fact about this card. So let's start the review with the design of the card guys. तो ये कार्ड दिखता कुछ ऐसा है. It has a blue background, Air India का लोगो है, SBI का लोगो है and Visa Infinite जो इसका issuer है उसका भी लोगो इन्होंने दिया है. In my opinion, this card is very eye-catchy. I somehow like the blue color that they've associated. It looks very classy for a premium card, which it should only. Now let's talk about the joining fee of this card. तो इस कार्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ 1.5 years से. I had paid ₹5,000 plus GST as the joining fee. मैंने इस कार्ड को अपग्रेड किया था from my prime card because I wanted to travel a lot on the Air India Airlines. Much more details about it later. But with spending ₹5,000 plus GST, I was rewarded with 20,000 reward points guys. Now every reward point in this card is 1 air mile फॉर एयर इंडिया एयरलाइंस. बट एयर इंडिया एयरलाइंस को कन्वर्ट करने के लिए आपको उनके प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ता है. इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम और द FFP. नाउ द डाउन साइड अबाउट दिस प्रोग्राम इज इसमें अप्लाई करके अप्रूव होना ही is a difficult task. I don't know why Air India has made it so complicated, but for some reason it's a horror story. Trust me, a lot of people don't even want to sign up for this program or this loyalty program run by the Air India Airlines just because it is crappy. But the benefits that this program has, those are very nice guys. Now let's talk about the small rewards or the basic rewards that you get with this card. When you spend ₹100, you get 4 reward points. In short, जब आप 100 रुपया स्पेंड करेंगे आपको 4 एयर इंडिया माइल्स मिलेगी. इस चीज़ को ध्यान में रखना बिकॉज ये आपको वीडियो में आगे जाके काफ़ी रिलेट करने में ईजी होगा. When you spend anything on the Air India website or the Air India app, you get 10 reward points for every ₹100 that you spend. And now here comes the best part guys. जब आप खुद के लिए टिकट बुक करोगे इस कार्ड को यूज़ करके, you are going to get 30 reward points for every ₹100 spent guys. Yes, trust me, 30 reward points. Now before we go further into the video, you have to understand how much these reward points are worth with the Air India website. So uske liye I'm going to show you a few screenshots of the Mumbai Bangalore route, the Mumbai Goa route and the Mumbai Delhi route. So as you can see, the Mumbai Goa route for example is 5,580 points. Okay, अभी मैंने जब इसे ज्वाइन किया था 5,000 plus GST भर के I had got 20,000 reward points. So that is almost 4 tickets for Mumbai Goa Goa Mumbai route guys. Isn't that really great? मतलब 5,000 में मैं 4 टिकट्स यूज़ कर सकता हूँ for Mumbai Goa route, which is fantastic. So joining fees तो आपकी 100% पूरी वसूल हो जाएगी. Now coming to the annual fee with this card, that comes at ₹5,000 again, जिसके अगेंस्ट पे वो आपको सिर्फ 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं. काफ़ी कम है, बट देन 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स एवरी ₹100 इज़ माइंड ब्लोइंग. बिकॉज अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हो ऑन द एयर इंडिया नेटवर्क, और एयर इंडिया का नेटवर्क काफ़ी ही बड़ा है गाइज अक्रॉस इंडिया, then this 30 reward points for every ₹100 spent is a lot. Just to give you an example, अगर आप 25,000 रुपीज़ की टिकट्स बुक करते हो खुद के लिए, बिकॉज अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हो देन 25,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ टिकट्स इज़ नथिंग, ट्रस्ट मी. तो आपको सीधे 7,500 पॉइंट्स मिल जाते हैं एयर इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए. अगेन गाइज 7,500 इज़ मोर देन 1 ticket फॉर अ मुंबई गोवा रूट. इनफैक्ट इट्स almost a Mumbai Bangalore ticket guys, so it's not small in my opinion, and that too only by spending 25,000 rupees. So that is one benefit. Now coming to the best part, the milestone benefits that you have with this card. So if you spend ₹5 lakh in an anniversary year, you are entitled to get 20 more thousand reward points guys. Yes, again 4 tickets for Mumbai Goa route or 2 tickets for Mumbai Delhi route. अगर उसके बाद आप spend करते हो 10 lakh rupees,
then you get 30,000 more reward point, guys. Isn't that amazing and crazy? उसके बाद if you spend rupees 20 lakh, you are gonna get 50,000 more bonus reward point, guys. So totally annually in a year you can earn up to 1 lakh bonus reward points. जो ज्वाइनिंग फी के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो अलग, जो बेसिक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये 20 लाख रुपीज स्पेंड करने पे वो अलग. तो इफ़ यू गेट दिस सिनेरियो, it's so easy to accumulate a lot of reward points on this card. But the only part is आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ईजिली अक्यूमुलेट करने के लिए पहले तो एयर इंडिया के फ्लाइट्स में काफ़ी फ्लाई करना होगा. इसके लिए ये कार्ड इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर समवन हु इज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर. सेकेंडली, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं इनको रिडीम भी आप मैक्स बेनिफिट उठा सकते हो ओनली एयर इंडिया पे रिडीम करके. जैसे कि एग्जांपल मैं अभी ऊटी गया था, सो आई हैड टेकन अ मुंबई ऊटी फ्लाइट, बट देन आई अपग्रेडेड माई सेल्फ टू बिजनेस क्लास यूजिंग दीज पॉइंट्स एंड इट कॉस्टेड मी ओनली 9,000 पॉइंट, गाइज. इजंट दैट अमेजिंग? लाइक काफ़ी कम पॉइंट्स में मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाया था, विच इज़ रियली रियली गुड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस कार्ड. तो जैसे कि इस कार्ड को आप डोमेस्टिकली काफ़ी ज़्यादा ही यूज़ करने वाले हो, इसके लिए एयर इंडिया ने आपको डोमेस्टिक एक्सेस के लिए 8 फ्री एक्सेस दिए हैं पर ईयर, विच इज़ इन बैड इन माई ओपिनियन यूजिंग द वीज़ा इनफाइनाइट प्रोग्राम. एंड आपको प्रायोरिटी पास का भी मेंबरशिप देते हैं, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड गाइज. आपको सिर्फ प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप मिलता है, उसके साथ फ्री एंट्रीज इंटरनेशनली नहीं मिलती. दोज आर गोइंग टू बी चार्ज एट $27 प्लस GST. सो डोंट एवर यूज द प्रायोरिटी पास दैट यू गेट विद दिस कार्ड बिकॉज दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ फी फॉर यू गाइज. सो प्लीज बी केयरफुल. सो टू सम इट अप फॉर यू गाइज, इन माई कंक्लूजन मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि इस कार्ड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंट फ्लायर डिराइव कर सकता है, एंड दैट टू हु फ्रीक्वेंटली फ्लाइज ऑन एन एयर इंडिया नेटवर्क. एंड अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो काफ़ी कम फ्लाई करता है और आप सोच रहे हो मैं ये कार्ड लेके फ्लाई ज़्यादा करूँगा, डजंट मेक एनी पॉइंट गाइज, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो एयर इंडिया नेटवर्क पे फ्लाई करने से. So guys, with this I end my video. Let me know if you like this video. Give me a like, share, comment, and let me know in the comment section below if you liked it or if I've missed something for you guys. I've tried my best to go over everything, and I'll see you in another one, guys.